So hello everyone. At this class I'm going to discuss some numericals based on linear programming problems. In the last class I have given the notes on different types of linear programming problems. There are three types. Number one is diet problem. I have explained the definition, the meaning of diet problem, as well as I have given one example also. Number two is manufacturing problem. So I have explained the meaning of manufacturing problem, but I have not given any examples. So today I will discuss the second type of linear programming problem, that is manufacturing based problem, right? So whether it is a diet problem or manufacturing problem or transportation problem, our aim is to find the objective function as well as subject to constraints, because without the mathematical representation of an LPP we cannot find the maximum or minimum value, or you can say the optimal value, right? So इसीलिए क्वेश्चन को पहले ठीक से 2-3 बार पढ़ना है, समझना है क्या वेरिएबल लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होगा, ये सब कुछ क्वेश्चन से ही पता चलेगा. बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ओके, सो रीड द क्वेश्चन. One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat. Okay, one kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat. Another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. ये सब क्या दिया हुआ है? मतलब एक केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी दिया हुआ है. ठीक है, ये सब डाटा दिया हुआ है. एक केक बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो सब क्वांटिटी दिया हुआ है. 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट फॉर द फर्स्ट काइंड ऑफ केक, whereas to prepare the second kind of cake it requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Okay, find the maximum number of cakes. You are asked to find the maximum number of cakes which can be made from 5 kilogram of flour and 100 kilogram of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes. एक्चुअली केक बनाने के लिए तो सिर्फ फ्लोर एंड फैट नहीं चाहिए, और भी सामान चाहिए. तो लास्ट में वो मेंशन किया कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग द केक्स, राइट? सो ये लास्ट जो कंडीशन है दैट इज डिफरेंट. मेन क्वेश्चन यहां से यहां तक है. मतलब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स. सिंस ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट इज मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्रॉब्लम, तो मतलब सबको पता चल गया इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया है, ब्रैकेट में ऐसा कुछ दिया है क्या? मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इट इज नॉट गिवन. यू हैव टू रीड दिस, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, because from manufacturing problem we can determine always the maximum value, whereas from diet as well as from transportation problem we can determine minimum values, right? So यहाँ पे क्या find out करना है? Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kilogram of flour and 1 kilogram of fat. You are asked to find the maximum number of cakes. Maximum मतलब ज्यादा. So that means we can say that it is a manufacturing based problem. Okay? So maximum number of cakes कब मिलेगा? First of all, you tell me how many types of cakes we need to manufacture. There are two types of cakes. One kind of cake, that means you can say first kind of cake and second kind of cake. So ये दो टाइप का केक मैक्सिमम कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? तो इसका मतलब कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मतलब वी कैन कंसिडर लेट x number of first kind of cake and y number of second kind of cake we have to manufacture, because see, without variable we cannot construct
any objective function. Apart from objective function, we cannot construct subject to the conditions. Yes, mathematical representation of LPP के लिए क्या क्या चाहिए? Objective function and subject to the constraints. उसके लिए तो वेरिएबल चाहिए, राइट? तो वेरिएबल तो क्वेश्चन में नहीं दिया है. वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा? Since you are asked to find the maximum number of cakes, let x number of first kind of cake and y number of second kind of cake we have to manufacture. So like this you have to start. Solution: let x number of first kind of cake and y number of second kind of cake we have to manufacture. Okay, let x number of first kind of cake and y number of second kind of cake we have to manufacture. तो इसके बाद नेक्स्ट क्या किया था? डाइट प्रॉब्लम जो मैं जैसे बताया था, इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व. आफ्टर कंसिडरिंग द वेरिएबल्स, नाउ चेक हाउ मेनी वैल्यूज आर गिवन, मींस डाटा, हाउ मेनी डाटाज आर गिवन. वो सब डाटा को एक टेबल के अंदर लिखो. देन देयर विल बी वेरी लेस चांस ऑफ इनकरेक्ट द क्वेश्चन. दैट मीन्स एक टेबल बनाओ, टेबल में सब कुछ डाटा एंटर करना है. Cakes type 1, type 2, because there are two types of cakes. Okay, number of cakes क्या क्या कंसिडर किया? x and y. इसके बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट क्वेश्चन में दिया गया है? फ्लोर एंड फैट. सो फ्लोर, फर्स्ट काइंड ऑफ केक के लिए कितना फ्लोर दिया हुआ है? 200 ग्राम ऑफ फ्लोर. और सेकेंड काइंड ऑफ केक के लिए 100 ग्राम ऑफ फ्लोर. वेरेस फैट कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम फॉर फर्स्ट काइंड एंड 50 ग्राम फॉर सेकेंड काइंड. अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज, इज देयर एनी अदर वैल्यूज? यस, लास्ट में जो दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट. ये तो लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ डाटा एंट्री नहीं करना है. ओके, सो सब कुछ डाटा एंट्री कर दिया अपार्ट फ्रॉम 5 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम. वो भी मैं बताऊंगा कैसे इंक्लूड करना है इसको. नाउ फ्रॉम दिस टेबल राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Objective function, what is the meaning of objective function? This is a linear function in two variables or more variables from where we can determine maximum or minimum value. So objective function is denoted by z. Say z is equal to, क्या find out करना है? जो find out करना है that is our objective function. Since you are asked to find the maximum number of x, maximum value कब find out कर सकते हैं? जब x और y को add करेंगे. Yes, और मिनिमम कब होगा? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू x प्लस y, बिकॉज x नंबर ऑफ केक फर्स्ट काइंड ऑफ केक एंड y नंबर ऑफ सेकंड काइंड ऑफ केक वी हैव टू मैन्युफैक्चर, ऐसा एज्यूम कर लिया था. तो मतलब x और y को अगर ऐड करूंगा तो दैट ओनली विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स वी कैन मैन्युफैक्चर. यस, सो आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू x प्लस y ओनली. नाउ सब्जेक्ट टू the constraints, subject to the constraints में क्या क्या आएगा? To manufacture the maximum number of cakes we need 5 kilogram of flour. मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स के लिए मैक्सिमम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर दिया हुआ है. मैक्सिमम, तो फ्लोर को ऐड करना है. दैट मीन्स 200x प्लस 100y, बिकॉज मैक्सिमम केक मैन्युफैक्चर करने के लिए तो ऐड करना पड़ेगा ना सब फ्लोर को. 200 प्लस 100, so 200x plus 100y, it will be whether it is less than 5 kilogram or more than 5 kilogram, because to prepare maximum number of cakes, maximum 5 kilogram of flour is required. So maximum 5 kilogram means it is not more than 5 kilogram, so it will be always less than 5 kg. लेकिन एक बात,
यहाँ पे 200 ग्राम 100 ग्राम दिया हुआ, यूनिट चेक करना है, सेम यूनिट होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो किलोग्राम है, लेट अस कन्वर्ट दिस किलोग्राम इनटू ग्राम, सो इट विल बी 5000, ओके। और वी कैन राइट इट एज ट्वाइस x plus y less than or is equal to 50. Say this is first inequation. Second one, if we add the fats 5 gram, that means 25x plus 50y, it is always less than 1 kilogram, that means 1000, which implies x plus 2y less than or is equal to 40. They say this is equation number 2. After that, don't forget to write x comma y greater than equal to 0. This 2 indicates that x and y are always a positive quantity. Yes. So this is the mathematical representation of the given question. Means LPP का जो mathematical representation है. Since you are asked to find the maximum number of k's, so that's why you have to add x and y. Subject to the conditions और subject to the constraints क्या होगा? 200x plus 100y is always less than or equal to 5000. Why I have written 5000? Because यहाँ पे किलोग्राम है यूनिट, बाकी दो में ग्राम है, इसीलिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से 100 कॉमन लेने से ये मिलेगा। सिमिलरली फैट को भी ऐड किया, सेम, ओके। सो दिस इज the mathematical part of or mathematical representation of the given question, okay. You just remember the objective function z is equal to x plus y and subject to the conditions, okay. इसके बाद और क्या बाकी है? Now the remaining part is completely based on class 11 concept. Graphically solve करना पड़ेगा, find out the corner points, okay. So now I will discuss the graphical part. Now see the graphical part. To find the maximum number of k's, first write down the inequation as equation, that is twice x plus y is equal to 50. From this find out the 2 points so that we can plot in the graph. So x, y, put x equal to 0, y is 50, put y is equal to 0, x is 25. Similarly from the second inequation, x plus twice y is equal to 40. यहाँ से भी दो पॉइंट को फाइंड आउट करना है, दैट इज पुट x 0, y is 20, then put y 0, x is 40. So from here I got 0, 50 and 25, 0. Similarly from the second one 0, 20 and 40, 0. Now draw the graph. यहाँ तक समझ में आने से बाकी ग्राफिकल पार्ट बहुत इजी है, बहुत बार प्रैक्टिस किया तो सेम प्रोसेस में ही जाना है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या मिला वो सब प्लॉट करना है। 0, 50, 0, 50 एंड 25, 0, 0, 50 से here 0, 50, 0, 50 and 25, 0, 25, 0. Join these 2 points. After joining these 2 points, don't forget to write the inequation, that is twice x plus y less than or is equal to 50. Similarly from the second one is 0, 20, 0, 20 and 40, 0, 40, 0. Join these 2 points. Again after joining these 2 points, write down x plus twice y less than or is equal to 40. ओके तो यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड द फिजिबल रीजन, दैट मीन्स द कॉमन सॉल्यूशन एरिया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? यू हैव टू पुट x and y 0, 0 in the first inequation. So if I put 0, 0, 0 less than equal to 50. So 0 less than equal to 50, 0 less than equal to 50, this is true. So you have to shade towards the origin, towards the origin. Again in the second inequation if I put, it will be 0 less than equal to 40. This is also true. You have to shade towards the origin. Okay, so दोनों ही satisfy किया, इसीलिए towards the origin हुआ. Now
tell me which one is the feasible region. That means common solution area कौन सा है? This one. This is the common solution area. This is the common solution area. Yes. So here how many corner points are there? 4 corner points. 1, 2, 3 and 4. Okay. Out of 4 corner points, how many points we know? 1, 2, 3. But we don't know this corner point, right? So for this, what you have to do? You have to solve these two equations. You know how to solve linear equation in 2 variables. So let us solve these two equation. Normally जैसे solve करते हैं वैसे ही करना है. Equation 1 के साथ 1 ही multiply करना है. Twice x plus y is equal to 50. Equation 2 के साथ 2 multiply करने से हो जाएगा twice x plus 4y is equal to 80. So if I subtract these two, so this will be minus 3y is equal to minus 30. So y is 10. Y का value 10 मिल गया. Now put the value of y either in the first equation or in the second equation. So अगर first equation में put करूँ तो twice x is equal to 40. So x is equal to 20. So now we know this corner point also 20, 10. Okay. You can solve in any way because you know how to solve linear equation in 2 variables. You can use elimination method, substitution method. कोई भी मेथड यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जो मैं फाइंड आउट कर लिया 20, 10. ओके. नाउ द लास्ट थिंग यू हैव टू डू, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ x. यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट और z इज इक्वल टू x प्लस y टेबल बनाना है. सो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लेट अस पुट 0, 20. इफ आई पुट 0, 20 देन द वैल्यू ऑफ z इज 20. Next put 0, 0. If I put 0, 0, z is 0 only. Next put 25, 0. If I put 25, 0, z is 25 only. And at last, यहाँ पे space नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. If I put 20, 10. If I put 20, 10, then the value of z is 30. So since you are asked to find the maximum number of cakes, so which one is the maximum value? 30 is the maximum value. So ब्रैकेट में सिर्फ लिखना है मैक्सिमम. लेकिन मैक्सिमम तो मिला, कौन सा पॉइंट में मिला? At 20, 10. That means when x is equal to 20 and y is equal to 10, then only we can prepare the maximum number of cakes, right? तो यहाँ पे solution ऐसे लिखना है लास्ट में conclusion. So z equal to 30 is the maximum value when first kind of cake is equal to 20 and second kind of cake is equal to 10. That's it. Okay. ऐसा ठीक से solve करना है, थोड़ा neat and clean होना चाहिए, तो फिर जाके full marks मिलेगा. Okay. Diagram neat and clean होना चाहिए. So this is one model of manufacturing problem. Some more models of manufacturing problem I will discuss now. Let us discuss the next question. Read the question very carefully. Once again I am telling, read the question very, very carefully. A manufacturer produces nuts. This is nuts. A manufacturer produces nuts and bolts. Okay. So since a manufacturer produces nuts and bolts, clearly थोड़ा सा first line से थोड़ा सा hint मिल गया कि this is manufacturing based problem, right? It takes 1 hour. It takes 1 hour work. 1 hour of work on machine A, 3 hours of work on machine B to produce a package of nuts. And it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. तो मतलब एक मैन्युफैक्चरर जब nuts and bolts मैन्युफैक्चर करेगा, उसके लिए टाइम कितना चाहिए? ऑब्वियसली मशीन से ही मैन्युफैक्चर करेगा, तो मशीन का टाइम क्या चाहिए? फर्स्ट नट्स के लिए 2 टाइप का मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी. तो मशीन ए टेक्स 1 hour टाइम, whereas machine B takes 3 hours of time. For to manufacture bolts, 3 hours on machine A and 1 hour on machine B. Okay, he means that manufacturer, he earns a profit of rupees 17.5
he earns a profit of rupees 17.5 per package on nuts and rupees 7 per package on bolts. How many packages of each? Read the question from here very carefully. How many? Because यहाँ से ही objective function मिलेगा हम लोगों को. How many packages of each, that means nuts and bolts, should be produced each day so as to maximize? Since it is a manufacturing based problem, so that means you have to find the maximum value. So यहाँ से मिल गया हमें confirmation के this is manufacturing based problem because you have to maximize. क्या maximize करना है? You have to maximize his profit if he operates his machines for at most 12 hours a day. Okay? So that means यहाँ पे दो type का machine है, machine A and machine B. So if he operates his machines for at most 12 hours means at most means maximum 12 hours a day. मतलब एक दिन में एक machine 12 घंटा ही काम करेगा. So how many types of machines are there? Two types. So machine A will work for 12 hours. Similarly, machine B also will work for 12 hours only. तो मैक्सिमम 12 आवर्स ही काम करेगा, नॉट मोर देन 12 आवर्स. ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू हिज प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना कितना है नाट्स में? नाट्स में उस वो मैन्युफैक्चरर को 17.5 रुपीज मिलता है पर पैकेज ऑन नट्स. सिमिलरली रुपीज 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. To find the objective function and subject to the conditions or subject to the constraints, first you have to consider the variables. So variables consider करने के लिए वो statement क्या होगा? वो statement क्या होगा? How many packages of nuts should be? How many packages of each should be produced? Each means nuts and bolts. Let X number of nuts and Y number of bolts. Y number of bolts are manufactured. ओके, ठीक है. मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स कितना मैन्युफैक्चर करना है. दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो लेट अस कंसीडर एक्स नंबर ऑफ नट्स एंड वाई नंबर ऑफ बोल्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर और वी हैव टू मैन्युफैक्चर. ओके, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन ओनली. ओके, अभी एक टेबल बनाना है, उसमें सब डाटा को एंट्री करना है. अभी वो टेबल में क्या क्या होगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर? Two types of goods, that is nuts and bolts. Okay, number of goods, we are considering the number of goods as X number of nuts and Y number of bolts we have to manufacture. Apart from this, machine A, machine B, and the profit part is also given. So machine A, nuts manufacture करने के लिए it takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. Similarly, it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. Okay, यहां से यहां तक जो दिया था वैल्यूज सब कुछ एंट्री कर लिया. इसके बाद प्रॉफिट के बारे में आएगा. ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 17.5 per package on nuts. So here will come the profit part, that is rupees 17.50 and rupees 7.00. These are the profit parts, right? So हो गया. अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि ये एटमोस्ट 12 आवर्स का यूज क्यों नहीं किया? वो तो लास्ट में यूज होगा. कहां पे यूज होगा? नाउ आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन.
the objective function is z is equal to, once again read the question from here, how many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit. So that means profit क्या क्या दिया हुआ है, maximize his profit बोला तो profit का कॉलम देखना है. Z is equal to 17.5x plus 7y. Okay, maximize his profit बोला, so प्रॉफिट का कॉलम से जो वैल्यूज है वो लिख लिया 17.5 plus 7y. This is our objective function. Okay, now write the subject to the constraints or subject to the conditions. Subject to constraints. Subject to constraints. That means these are the linear inequations. क्या क्या होगा? For machine A, how much time it requires for each day to manufacture nuts and bolts? If he operates his machines for at most 12 hours a day, at most means maximum 12 hours. So machine A nuts and bolts manufacture करने के लिए x plus 3y less than or equal to 12 होगा, yes or not? Not more than 12 hours. Similarly, for machine B also this will be 3x plus y less than or equal to 12. This is say in equation number 2. Apart from this, don't forget to write x comma y greater than or equal to 0, because x and y are the variables which are either 0 or positive. X and y cannot be negative. Okay, so x plus 3y less than or equal to 12. This is the first inequation. कहाँ से मिला? From machine A. Because to manufacture nuts and bolts at a time, machine A can work at most 12 hours a day in a day. Okay, so 12 hours से ज्यादा नहीं होगा. That's why the inequality sign is less than or equal. That means it is either 12 or less than 12, but not more than 12. At most means it should not be more than 12. Okay, similarly for machine B also 3x plus y less than or equal to 12. मतलब दोनों nuts and bolts को मिला के एक मशीन कितना घंटा काम कर सकता है एक दिन में? सो 12 घंटा काम कर सकता है. तो दोनों को मिला के, इसका मतलब दोनों को ऐड करके ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज you have to solve part graphically and you have to determine the maximum profit. Okay, now I will explain the graphical part. So for graphical part, first you have to solve these inequations. How many inequations are there? There are two inequations. First one is x plus 3y is equal to 12, whereas the second one is 3x plus y is equal to 12, right? Okay, so from the first equation, find out the coordinates. That is, put x equal to 0, we'll get y4. Similarly, if I put y0, we'll get x12. From the second one also find out the 2 points, because you have to solve graphically. So without coordinates we cannot draw we cannot find the feasible region. So put now again here x equal to 0, y is 12. Put y0, x4. Now draw the graph. We know the coordinate part, so now draw the graph. Diagram हमेशा neat and clean होना चाहिए. Okay, so from the first equation क्या क्या मिला? 0, 4 and 12, 0, right? 0, 4 and 12, 0. So 0, 4, say this is 0, 4 and 12, 0. Join these 2 points. After joining the 2 points, mention the inequation also, x plus 3y less than or equal to 12. Similarly, from the second one, 0, 12 and 4, 0. So 0, 12 यहाँ पे आ जाएगा. Suppose 0, 12 and 4, 0. Again join these 2 points. After joining the 2 points, mention the inequation, that is 3x plus y less than or equal to 12. Okay, now what's the next part? Next part is you have to find the feasible region. For this
you should know whether you have to shade towards the origin or away from the origin. For this, you have to put x and y coordinate 0 in the first inequation as well as in the second inequation. So if I put 0, x coordinate as well as y coordinate 0, so this will be true or false? It will be always true only, because 0 is always less than 12. Similarly, in the second inequation also, if I put 0, 0, this is also true. So that means in both cases you have to shade towards the origin only. Okay? Since in both cases you have to shade towards the origin, so now clearly we can say that the feasible region is here bounded, like the last question. Last question maybe feasible region bounded ही आया था. Okay? So which one is the feasible part here? Feasible region means the closed part here, this one. Yes, feasible means the common solution area. So this is the common solution area, right? So now almost काम खत्म हो गया हम लोगों का, because now since we know the feasible region, so from the feasible region now you have to find what? The corner points. How many corner points are there? 1, 2, this one is the third one, and this one is the fourth one. So out of 4 corner points, we know 3 coordinates, that is 0, 4, 0, 0, 4, 0, but we don't know this one. You can find the coordinates of this point by solving these 2 equations. So let us solve equation 1 and 2. Multiply equation 1 with 3, that is this will be 3x plus 9y is equal to 36. इक्वेशन 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 12. तो सब्ट्रैक्ट करने से 3x कैंसिल हो जाएगा. सो 8y इज इक्वल टू 24. y is 3. Put the value of y either in the first or in the second equation. Let us put in the second equation. So if I put the value of y in the second equation, this will be thrice x is equal to 9 or x equal to 3. So now we know the fourth corner point also. That means 3, 3 only. Okay. So this will be 3, 3. Okay. Now since we know all the 4 corner points, now it is very easy to find the maximum value. Yes. Now make this table, because this is the last part. Corner points. And z is equal to 17.5x plus 7y. Yes, 17.5x plus 7y. First corner point is 0, 4. So if I put 0, 4, z is 28. Next put 0, 0. Z is also 0. Next put 4, 0. If I put 4, 0, so 17.5. So this will be 70. 70, and at last put 3, 3. So if I put 3, 3, what will be the value of z? So if I put 3, 3, this will be so this will be 73.5. Okay. So after putting all the 4 corner points, now we can clearly say that the maximum profit is 73.5. From which part or from which point we got? From the point of intersection only. So since you are asked to find the maximum profit, यहाँ पे arrow mark देके bracket में लिख देना है. This is maximum value. Okay. So the maximum value is here 73.5 at 3, 3. That means if we manufacture 3 number of nuts and 3 number of bolts in a day, then the manufacturer gets his maximum profit, that is 73.5 rupees. Okay. So like this type of questions you have to practice more. So till now I have discussed 2 models, diet problem and manufacturing problem. Now just one method, one problem is there, that is a transportation problem. That one also I will discuss.
सो ऐसा मॉडल का क्वेश्चन करने के साथ जो मैं नोट्स दिया डेफिनेशंस, यू हैव टू रीड दोज डेफिनेशंस वेरी केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में लॉन्ग क्वेश्चन तो एक आएगा 5 मार्क्स का और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और वो जो नोट्स में है ठीक से नोट्स स्टडी करने से हो जाएगा और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। सो another model is there, that is transportation problem. I will discuss in the next class. So thank you for today.